गुड इवनिंग एवरीवन। जो लोग एप्लीकेशन पर हैं एक बार मुझे बता दोगे और ऑडियो वीडियो दोनों चीज़ें क्लियर है सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर सेशन। आज का सेशन में भी थोड़ा छोटा हो सकता है। आई विल फिनिश इन 1 आवर। और जो लोग यूट्यूब पर हैं, कैन यू टेल मी एम आई ऑडिबल क्लियरली? एवरीथिंग इज फाइन टू ऑल? ओके, थैंक्स पार्था फॉर लेटिंग मी नो। तो हम लोग 2 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। हम लोगों ने थोड़ी बहुत चीज़ें देखी है ग्रुप थ्योरी की, कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। आज का लेक्चर भी अपना उसी पैटर्न पे बेस्ड होगा। मैंने आपको कुछ होमवर्क दिए थे प्रूफ करने के लिए। आई होप आप सब लोगों ने उनको ट्राई करा होगा, है ना? तो टुडे वी विल डिस्कस कि उनको कैसे टारगेट करना है उन प्रॉब्लम्स को। साथ ही में कुछ नए प्रॉब्लम्स भी हैं मेरे पास डिस्कस करने के लिए। और अगर टाइम अलाउ करेगा तो वी विल गो फॉर Calais theorem and generalized Calais theorem. Anyone having any doubt? कोई डाउट किसी का? If yes, feel free to ask me. होमवर्क 2 नहीं हुआ, कोई बात नहीं। आई एम हियर टू हेल्प यू। डिस्कस करेंगे ना? हाय सर, कैन आई कॉन्टेक्ट यू? यस अमित, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। विल वी गेट टेस्ट सीरीज इन मंथली सब्सक्रिप्शन और नेट गेट? नो, मंथली सब्सक्रिप्शन में आपको टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी। गुड इवनिंग हितेश कुमार, गुड इवनिंग रेशव, गुड इवनिंग अमित। टेस्ट सीरीज आपको मंथली सब्सक्रिप्शन में नहीं मिलेगी, ठीक है? कोई बात नहीं, आई विल हेल्प यू। एक बार मुझे बोल के बता सकते हो कि प्रॉब्लम नंबर 2 क्या था? मतलब मुझे एक्चुअली याद नहीं है। ठीक है अमित, आप मुझे कॉल कर लेना, मतलब अभी मत करना, अभी तो मेरी क्लास है। एक बार कोई बता देगा एप्लीकेशन पे जो लोग हैं कि 2nd प्रॉब्लम कौन सा था? आई डोंट रिमेम्बर। थोड़ा सा बस ऐसे हल्का फुल्का लिख दो, मैं समझ जाऊंगा। तो ये जो कोर्स है इट इज फॉर PhD इंटरव्यू प्रिपरेशन। अगर आप नेट एंड गेट क्वालिफाइड है एंड यू आर लुकिंग फॉर अ प्लेटफॉर्म जहां पर आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराई जाए, स्पेशली एडवांस लेवल इंटरव्यू की, जहां पर आप IITs में, NITs में, आइसर्स में, TIFR में, CMI में, इन जगह पे इंटरव्यू दो, तो उस लेवल की जो प्रिपरेशन है वो यहाँ पे करवाई जाती है। जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। अनिर्बन कल्याण, कोई भी आप मेरे से, आप मुझे ये बता दो कि प्रॉब्लम क्या था 2nd वाला? एनी फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ यूनिट ऑफ फील्ड? ओके, ठीक है, चलो। सो लेट्स बिगिन विद द होमवर्क प्रॉब्लम, है ना? पहले होमवर्क प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं, देन वी विल मूव टू द finite subgroup of a unit of a field is cyclic group. The first notice something. If n be any natural number, suppose you give me any natural number, by this n I can generate a group Zn under addition modulo n. तो आपको पता है कि Zn is a finite cyclic group, and in a finite cyclic group, if D divides n, then we have exactly phi D elements of order D. अगर मैं यहाँ पर एलिमेंट्स कलेक्ट करूं, सारे ही कितने एलिमेंट्स होंगे? सो जब जब डी डिवाइड करेगा एन को, आई कैन जनरेट 5D एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n, एंड इफ आई सम अप ऑल दीज एलिमेंट्स आई एम गोइंग टू गेट ऑल द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप. सो n will be equal to summation d divides n 5D, where I am speaking for positive divisors, not for negative divisors. So this is the identity we are going to use, and this is a well-known result in number theory. कि अगर आप सारे के सारे ID को सम अप करो, where D divides n, you get n. And the proof is easy because of this Zn group. You know that in a finite cyclic group, there exists 5D elements for each divisor D of n. So this result you already know. I'm going to make use of this result. Okay, fine. So suppose you have an infinite field. I will prove this statement.
any finite subgroup of multiplicative group of a field, multiplicative group of a field F under addition and multiplication is cyclic. So this is my task. इसके applications पता है क्या क्या है? So let me write one or two applications. Suppose someone is asking you, what do you think about finite subgroups of Q star dot C star dot R star dot, because Q, C, R, these are fields with respect to simple addition and multiplication. So these form field. तो इसके अगर आप कोई भी finite subgroup लोगे तो it will be a finite subgroup of multiplicative group of these fields. So each subgroup is going to be a cyclic group. तो आप कोई भी R star में नॉन साइक्लिक ग्रुप नहीं बना सकते फाइनाइट ऑर्डर का. मोरओवर आप फाइनाइट ऑर्डर का बना भी नहीं सकते आर स्टार में, तो दो ऑर्डर के अलावा. सेम फॉर क्यू स्टार, बट सी स्टार में पॉसिबल है. तो दिस स्टेटमेंट विल हेल्प यू टू आर्ग्यू इन अ नाइस मैनर. सो लेट मी गिव यू द प्रूफ. Let G be a finite subgroup of F star dot. F star dot क्या होंगी? यूनिट्स ऑफ द फील्ड F. तो आपको पता है किसी भी फील्ड में सारे ही नॉन जीरो एलिमेंट जो होते हैं वो यूनिट्स होते हैं. तो F स्टार में एग्जैक्टली F माइनस जीरो एलिमेंट्स आएंगे. मतलब जितने F में एलिमेंट्स है उसमें जीरो रिमूव कर दो, ऑल द एलिमेंट्स विल बी देयर. नाउ लेट्स सपोज order of G is n. I will target this n. I want to show that G is cyclic. It is enough to show that G has an element of order n. So I will try to generate some element of order n, or I will give you the argument that there must exist some element of order n. Okay. So suppose let D be any positive divisor of n. Let D be any positive divisor of n. So there are two cases. G will have an element of order D, or G will not have an element of order D. These are the two cases possible. So case 1. If G has an element of order D, say X is an element of order D. तो अगर X order D का element है तो clearly the set generating by X or the subgroup generated by X, it will be given by X square, X cube, X to the power D minus 1 is non-identity, and X to the power D will be identity. But identity means 1, because फील्ड में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा? उसका यूनिटी एलिमेंट. सो लेट्स से यूनिटी एलिमेंट इज सिंपली 1. नाउ यू थिंक अबाउट दिस सेट. ऑल आर बिलोंग्स टू फील्ड आर टू द पावर डी इक्वल्स 1. कैन यू से समथिंग अबाउट दिस? लेट मी कॉल दिस एज अ टी सेट. कैन यू से समथिंग अबाउट द सब ग्रुप जनरेटेड बाय एक्स एंड दिस सी टी सेट? कि ये इसमें इंक्लूड होगा या ये इसमें इंक्लूड होगा या ये इक्वल होगा? जस्ट टेक 2 or 3 minutes, think about it. Just give me 1 minute, let me join you again. You just think about this side. What I have done, कि आपने ऑर्डर माना, and I assume that D divides n. Suppose G has an element of order D, say the X is the element of order D. So what do you think about this T set and this subgroup generated by X? So you think about it. I am joining in 1 minute.
कौन किस में इंक्लूड होगा? I claim that these two are same. देखो, clearly order of subgroup generated by X is D. Order of subgroup generated by X is D. Let Y be any element of subgroup generated by X, then clearly order of Y must divide D. Order of Y must divide D because order of this group is D. So let's suppose order of X is equal to some number K. So this K divides D. That means this D will be some integral multiple of K. So this D will be some integral multiple of this K. Now you do X to the power D, X to the power, Y to the power D. So Y to the power D will be Y to the power LK, but Y to the power LK is same as Y power K whole power L, but order of Y is K. So if you operate Y K times, you are going to get 1. It will be 1 power L, it will be 1. That means if you take an arbitrary element of this set, it is satisfying Y to the power D is equal to 1. And all the elements which are satisfying R to the power D is equal to 1 are available in the C set. So this shows that subgroup generated by X is contained in T. So subgroup generated by X is contained in T. Further, you can feel that T is contained in X as well. Why this is true? So this one we are fine with this. Now the later part you see in this way. This T is the collection of all points which satisfies this polynomial. This is a D degree polynomial, and over the field F, a polynomial of degree D can have at most D roots. A polynomial over a field F can have at most its degree times roots. जितने डिग्री होगी एट मोस्ट उतने उसके पास रूट्स हो सकते हैं. सो कार्डिनलिटी ऑफ टी इज लेस देन और इक्वल टू डी बिकॉज दिस इज कलेक्शन ऑफ ऑल रूट्स ऑफ दिस डी डिग्री पॉलिनोमियल. This is by fundamental theorem of algebra, and X is one subset of order D of T. So cardinality of T is less than or equal to D, and T is containing a subset of order D. That means T and X must T and this subset must be same. So this shows that T and this set must be same. Is it fine to all? Is it okay to all? So T and X subgroup generated by X will be same. अगर इतना आप समझ गए तो I am almost done with the proof. ठीक है? So from here you feel अब देखो आपने यहां से क्या चीज आर्ग्यू करी कि अगर D डिवाइड करेगा N को और केस वन अगर डी ऑर्डर का एलिमेंट हुआ तो वो एलिमेंट आप मुझे कितने भी लाके दो उनसे जनरेटेड जो सब ग्रुप होंगे ना वो टी के बराबर ही होंगे. इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर ईच डी आई हैव अ यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर डी. फॉर ईच डी आई हैव अ यूनिक सब ग्रुप एंड द सब ग्रुप इज दिस. सब ग्रुप इज दिस. सो फॉर ईच डी आई हैव अ यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर डी. सो केस वन वी आर गेटिंग फॉर ईच D that divides N, there exists a unique subgroup of order D. Precisely, the set is given by all those X or all those R belongs to field
such that r to the power d is 1. ठीक है. Also, number of elements of order d, it will be phi d for all d divides n. क्योंकि जो आपने सब ग्रुप बनाया था, सब ग्रुप जनरेटेड बाय एक्स, वो एक साइक्लिक सब ग्रुप है ऑर्डर डी का. द सब ग्रुप जनरेटेड बाय एक्स इज द साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर डी. और आप जो भी बना के लाओगे वो इस सेट के बराबर ही होगा, कोई नया सेट नहीं होगा. तो फॉर इन दिस सब ग्रुप, इस साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर डी, तो इसमें डी ऑर्डर के एलिमेंट कितने होंगे? जितने आपके पास जनरेटर्स होंगे. तो एक्स की वो पावर जिनका जीसीडी डी के साथ 1 होगा, वो सारे ही डी ऑर्डर के एलिमेंट्स होंगे. सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी. ये कौन से है? जब केस 1 में हो गया. केस 2, if for some d that divides n, there is no element of order d. There is no element of order d. अगर ये वाला केस अराइज हुआ तो कैन यू फील दैट दिस इक्वालिटी विल बी वायलेटेड? So can you feel that this is a contradiction? क्योंकि जिस भी डी के लिए मान लो कि आपके पास डी ऑर्डर के एलिमेंट नहीं मिले, तो जो डिवाइड कर रहे हैं उसके लिए तो एक्टिवली 5 डी एलिमेंट्स हैं, और जिस डिवीजन के लिए नहीं मिल रहे हैं उस वो यहाँ पे समेशन में 0 हो जाएगा, और वो समेशन में 0 हो गया तो ये कभी एन के बराबर नहीं आ सकता. सो दिस विल टेल यू कि जो राइट साइड है ये एन से स्ट्रिक्टली छोटी हो जाएगी. So this will give the contradiction. This will give the contradiction. That means the second case is not possible. Am I done with the proof? The second case will not be possible. That means for each divisor D, there has to be an element. For each D, there has to be an element. In particular, n divides n must have an element of order n. Am I done with the proof? Yes? Any doubt? केस 2, अगर किसी एक डिवीजर के लिए कोई भी एलिमेंट नहीं मिला, सो दिस इक्वालिटी विल बी वायलेटेड, बिकॉज जिसके लिए भी डिवाइड कर रहे हैं वी आर हैविंग एग्जैक्टली 5 डी एलिमेंट्स. सो इसका मतलब क्या हुआ कि केस 2 इज नॉट पॉसिबल. सो दिस शोज दैट केस 2 इज नॉट पॉसिबल. और केस 2 पॉसिबल नहीं होगा तो क्या होगा कि हर एक डिवीजर डी के लिए वी विल हैव एग्जैक्टली 5 डी एलिमेंट्स. That means G is cyclic, and so this implies G is cyclic. ठीक है, आगे समझ में सभी को. So this is the proof of second. Here I am using one statement that कि किसी भी फील्ड के ऊपर कोई भी आप डी डिग्री का पॉलिनोमियल लोगे तो उसके पास एटमोस्ट डी रूट्स होंगे. आई एम यूजिंग दिस. In case 1, why there is a unique subgroup of order D? देखो, case 1, if G has an element of order D, तो आपने जो सबग्रुप जनरेटेड बाय X बनाया है ये कहां से आया है? एक डी ऑर्डर के एलिमेंट से. बट अल्टीमेटली ये जो सबग्रुप है ये टी सेट के बराबर हो जा रहा है. ये बेसिकली उसके सॉल्यूशंस है जो x की पावर d बराबर 1 को सेटिस्फाई कर रहे हैं. अगर आप कोई दूसरा एलिमेंट भी अगर आप बनाओगे या कोई दूसरा सबग्रुप भी आप बनाओगे तो उसमें डी ऑर्डर का एलिमेंट आएगा. सो अगर आपने कोई और एलिमेंट लिए डी ऑर्डर के तो वो सब ग्रुप भी इसी के बराबर आएगा. तो दैट मीन्स देयर इज अ यूनिक सब ग्रुप. यू कैन नॉट मेक मोर देन 1. या ये कह सकते हो कि एक्स जो डी ऑर्डर के एलिमेंट्स है वो 5D से ज्यादा नहीं मिल सकते, क्योंकि आप जैसे ही 5D से ज्यादा निकालोगे बट सारे ही सब ग्रुप टी सेट के बराबर होंगे. आप देखो इस टी का इस एक्स से कोई लेना देना नहीं है अभी के लिए. तो आप कोई नया सब ग्रुप भी निकाल के लाओगे डी ऑर्डर का जो साइक्लिक होगा, या कोई एलिमेंट निकाल के लाओगे डी ऑर्डर का, तो वो भी इस टी सेट के बराबर ही हो जाएगा. इज इट फाइन नाउ टू ऑल? कल्याण, अब समझ में आया आपको?
ओके ग्रेट, चलो फाइन। तो इसको डायरेक्टली ही यूज कर सकते हो कि अगर कोई फाइनाइट फील्ड है तो फाइनाइट फील्ड का भी जो सब ग्रुप होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो मैंने फील्ड के फाइनाइट और इनफाइनाइट का कुछ भी यूज नहीं करा। इफ यू लुक इट माई प्रूफ, आई हैव नॉट यूज एनीथिंग फॉर द फाइनाइटनेस और इनफाइनाइटनेस। तो फील्ड में भी फाइनाइट में भी इनफाइनाइट, तो यू कैन से अगर कोई फाइनाइट फील्ड भी है तो उसका भी जो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप होगा वो हमेशा साइक्लिक होगा, क्योंकि फाइनाइट फील्ड का जो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप होगा वो एक फाइनाइट सब ग्रुप की तरह ट्रीट होगा, हेंस इट इज गोइंग टू बी अ साइक्लिक सब ग्रुप। कूल, चलो आगे बढ़ते हैं ना। अभी आपको और मजा आएगा जब मैं फील्ड थ्योरी पढ़ाऊंगा ना, मतलब फील्ड में जब हम गैल्वा में जाएंगे, साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल्स में जाएंगे, तो यू विल एंजॉय। बस ये कि आप थोड़ा सा पढ़ के आओगे तो मजे दोनों साइड से आएंगे, नहीं पढ़ के आओगे तो फिर मुझे मजे आएंगे, आपको मजे नहीं आएंगे। चलो, एक प्रॉब्लम और था ना कि इफ f plus dot is a field, you cannot find any 1-1 onto homomorphism between this group and this group. आप इन दोनों ग्रुप में कभी भी 1-1 onto homomorphism फाइंड नहीं कर सकते। तो इसका प्रूफ आपने अगर करा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो डिस्कस कर रहे थे। So the proof is easy. Case 1, if f is a field or f is a finite field, तो आप देख सकते हो अगर ये फाइनाइट फील्ड हुआ तो इसका कुछ ना कुछ ऑर्डर होगा। लेट्स सपोज ऑर्डर ऑफ इज n, देन ऑर्डर ऑफ f अंडर एडिशन इट विल बी n, एंड ऑर्डर ऑफ f, अगर आप इसके यूनिट्स लोगे तो एवरी नॉन जीरो एलिमेंट विल बी अ यूनिट, तो आपको जीरो एलिमेंट हटाना पड़ेगा। तो अगर आपके किसी एक सेट में n एलिमेंट से एक में n-1 एलिमेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप इन दोनों के बीच में बाइजेक्शन नहीं बना सकते, आप इन दोनों के बीच में बाइजेक्शन नहीं बना सकते। तो दिस इंप्लाइज f अंडर एडिशन कैन नॉट बी आइसोमॉर्फिक टू f अंडर मल्टीप्लिकेशन, अगर आपका केस फाइनाइट था। नाउ केस 2 इज फील्ड इज इनफाइनाइट, बट इनफाइनाइट के केस में वी विल ट्राई कि आप अपनी कैरेक्टरिस्टिक को आइडेंटिफाई कर लो कि कैरेक्टरिस्टिक आपकी 2 है या 2 से अलग है, बिकॉज 2 कैरेक्टरिस्टिक इज ऑलवेज स्पेशल, 2 कैरेक्टरिस्टिक इज ऑलवेज स्पेशल। वेरी गुड इवनिंग विश्वजीत सिंह। So case 2, when field is infinite. और कैरेक्टरिस्टिक को मैं इंट्रोड्यूस करूंगा इन बिटवीन, है ना, कि कैरेक्टरिस्टिक मुझे 2 लेना या नहीं लेना, तो आई विल इंट्रोड्यूस। लेट फाइंड be any group homomorphism, because we want to prove as a group. So suppose phi be any 1-1 onto group homomorphism from f plus to f star dot. So under group homomorphism, identity element goes to identity element, है ना, identity element goes to identity element. Now, let's suppose phi of -1 goes to some number alpha. Suppose phi of -1 goes to alpha. So this is a ring homomorphism. So you can say phi -1 plus -1. It will be same as phi -1, because right side is under multiplication. So that means phi -1, that means it will be alpha square. Now let me introduce the characteristic word. Suppose characteristic is 2. So this is the case when characteristic is 2. तो 2 कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है, 2 के सारे मल्टीपल 0 होंगे, और 2 कैरेक्टरिस्टिक में -1 और 1 दोनों बराबर होते हैं। सो ये कितना हो जाएगा, इट विल बी phi of -2
it will be alpha square. But 5 minus 2 will be 5, 0. 5 minus 2 will be 5, 0 because in characteristic 2 field, every multiple of 2 will be 0. So this will be 1 because of this. So this will tell you alpha square is equal to 1. So this implies alpha square is equal to 1. But that means, you see, if I take alpha minus 1 whole square, it will be alpha square plus 1 plus 2 alpha. But in a field with characteristic 2, 1 is same as minus 1. So it will be alpha square, it will be minus 1, it will be 0 because of 2. So it will be alpha square minus 1, but alpha square minus 1 will be 0. So this will imply alpha 1, alpha minus 1 is equal to 0. And we are inside a field में कभी भी 0 divisor नहीं होते. So this will force alpha has to be 1. Implies phi is not 1. Phi is not 1. This implies phi is not 1. क्योंकि 0 ऑलरेडी 1 पे जा रहा है. अब -1 को अगर आपने अल्फा पे भेजा है तो अल्फा को भी 1 होना पड़ेगा अगर आपकी कैरेक्टरिस्टिक 2 है तो. The next case is field is infinite and characteristic of field is 0. Is it fine to all now? Now, next case, when field is of 0 characteristic. So let's suppose in a similar manner, let psi be any 1, 1 on 2 group homomorphism from this set to this set. अगर आप मुझे कोई भी 1, 1 on 2 homomorphism दोगे ग्रुप्स की, so यहाँ पर आप देखोगे कि 1 बैठा होगा कहाँ पर. Let's suppose 1 goes to 0 क्योंकि यहाँ का यूनिटी एलिमेंट 1 है, यहाँ का आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, तो 1 तो 0 पे जाएगा. Phi of -1, अब यहाँ पे -1 1 से अलग होगा, तो phi of -1 कहाँ पे जाएगा? Let's suppose it is going to some element alpha. So you feel phi of -1 into -1, it will be phi -1 plus phi -1 because left hand side is multiplicative, right hand side is additive. So phi -1 -1 will be phi 1. So phi 1 is 0. This is nothing but phi -1, so 2 alpha. But we are in a field, if 2 alpha is 0, this will force alpha is equal to 0. That is a contradiction to the 1, 1 dash. Because 1 0 पे जा रहा है, कोई और एलिमेंट आप 0 पे नहीं भेज सकते अगर आप 1, 1 बना रहे हो तो. ये समझ में आया सभी को? यस, हेलो. So you cannot make the additive group and multiplicative group of field as isomorphic. They cannot be isomorphic. Okay, so we are done with this. Now let me ask you a new problem. Question. Under which condition a function from group G to G taking x to x inverse is a 1, 1 on 2 homomorphism? Can you think about it?
Under which condition fx is equal to x inverse from G to G, where G is a group, is a 1-1-2 homomorphism. करो उसको वर्कआउट करो, अभी करो, लो 1-2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट लो, सोचो अंडर विच कंडीशन इट बिकम्स a 1-1-2 homomorphism. I'll take 1 more minute. करते सेकंड वाला, ठीक है ठीक है ठीक ठीक ठीक। हाँ जी, क्या कह सकते हो? कल्याण आप कुछ बोलो, पार्था आप बोलो, अनिर्बन आप बताओ, विजय सिंह आप बताओ, what do you think about it? Under which condition it becomes a 1-1-2 group homomorphism? वन इज सेइंग जी इज अबेलियन। अब देखो ये बाइजेक्शन मैप जो है ना, ये 1-1-2 है, इसको 1-1-2 में कोई इशू नहीं है। क्लियरली एफ इज 1-1-2, क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट पे ही जाएगा, और ऑनटूनेस भी है, क्योंकि आप कोई भी एलिमेंट दोगे उसकी प्री इमेज क्या होगी, उसका इनवर्स। सो दिस इज नॉट द प्रॉब्लम। So for homomorphism, we will demand that suppose we are looking for a situation where fxy matches with fxfy. So it is nothing but xy whole inverse, that is nothing but y inverse x inverse equals to x inverse y inverse. अगर आप कुछ ऑपरेटिव प्रॉपर्टी लगाओगे तो आपके पास आएगा yx बराबर xy। कैसे आएगा? पहले आप राइट से y लगाओ, फिर पहले राइट से y लगाओ, फिर राइट से x लगाओ, फिर दोबारा आप लेफ्ट से लगाओ, ये दोनों चीजें, तो यू विल गेट द आंसर। जैसे इसको मैं कैसे कर सकता हूं, पहले मैं राइट से y लगाता हूं, तो y इनवर्स x इनवर्स y, इट विल बी x इनवर्स, राइट से x इनवर्स लगाओ, ठीक है, या लेफ्ट से y लगाओ, तो x इनवर्स y इज इक्वल टू y x इनवर्स, ठीक है। अब लेफ्ट से x लगाओ तो आपको जाएगा y बराबर एक्स वाई एक्स इनवर्स, राइट से x लगाओ y x बराबर एक्स वाई। तो यानी कि ये आपका तभी मैच करेगा जब आपके ग्रुप के एलिमेंट कम्यूट करेंगे। सो दैट मींस दिस डिमांड्स टू बी अ 1-1-2 homomorphism, this demands your group to be an abelian group. So this demands G to be abelian. G to be an abelian. So actually there is a motive behind this problem. There is a motive behind this problem. So अगर G abelian होगा, this will become a 1-1-2 homomorphism. My next question is this, based on the previous exercise. Does there exist a group G? Does there exist an abelian group G such that automorphism group is isomorphic to Z7? Can you use in this
problem, the previous exercise? Can you think about it? Does there exist an abelian group G whose group of automorphism is isomorphic to Z7? And what do you think about it? ये क्वेश्चन है ऑलरेडी एक बार टिफर में पूछा जा चुका है ना. So I took the problem, added some recipe to argue. और मैंने आपको सब कुछ दे दिया है जो इसमें आप यूज कर सकते हो. Take 2, 3, 4, 5 minutes. Try to link with this part. Try to link with this part. And why the answer is no? बाकी लोग भी सोचो. एक आंसर आया है मेरे पास, बाकी लोग सोचो. या फिर आर्ग्यूमेंट इज करेक्ट. F sending G to G, F from G to G, sending X to X inverse is of order 2. Because if you compose F 2 times, it is F of X inverse, it will be X inverse whole inverse, it will be X. So F square is fixing every element, so F square is identity. So order of F is 2. But where is F available? F is available in auto of G. Because automorphism of G में G से G पर सारी bijections आती हैं जो homomorphism होती हैं. So F is one such bijective group homomorphism, and this is of order 2. So this will demand order of automorphism of G will be even number. Will be even number because it has an element of order 2. It has an element of order 2. So it will demand that order of automorphism of G should be an even number. Fine. यानी कि ऐसा आप नहीं निकाल सकते. दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट. और Z7 तो क्या, आप कभी भी किसी भी फाइनाइट अबेलियन ग्रुप के लिए ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप को ऑड ऑर्डर का नहीं बना सकते. Because this special member of auto of G will demand your group to be of even order. Fine. Next problem. So under what condition a map from G to G taking X to X square is a 1-1 onto homomorphism? So what do you think about it? What do you think about it? Under what condition F from G to G
taking x to x square is a 1-1-on-2 map. Should be abelian. और कोई कुछ बोलना चाहेगा? अबेलियन तो होना चाहिए। ओके, कुछ और एक्स्ट्रा? देखो, सिर्फ अबेलियन से तो काम नहीं चलेगा, सिर्फ अबेलियन से काम नहीं चलेगा। एक और कमेंट है, अबेलियन एंड आइदर नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव। नहीं, नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव कहां से आया? क्योंकि हियर वी डोंट नो अबाउट पॉजिटिव और नेगेटिवनेस इन जी। एक्स स्क्वायर मींस एक्स को 2 बार ऑपरेट करना। एक्स का मतलब है कि एक्स स्क्वायर का मतलब है मैं एक्स को 2 बार ऑपरेट कर रहा हूं। अच्छा, एक चीज देखो ना, एक सिंपल सा मैं एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूं, एफ फ्रॉम जेड अंडर एडिशन टू जेड अंडर एडिशन। ये मैप क्या होगा? एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, बट जेड अंडर एडिशन है तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होगा? 2x। तो ये जो मैप है ना, ये 1-1 है बट नॉट ऑन 2, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो है 2z। तो जिसने बोला था कि एंड ऑल्सो नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, जेड के पास कोई भी 2 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है। आई हैव गिवन टू यू जेड इज अबेलियन, आई हैव गिवन यू साइक्लिक ग्रुप, but under these condition it is not a 1-1-on-2 homomorphism. Now can you say something? I have given you one nice example. Now can you say something? Cardinality of G not equal to 2. No. Something more you can say, Kalyan. Not equal to 2 is a smaller case. Can you generalize this? Can you generalize this? Can you generalize this? I just demand the sufficient condition, not necessary always, because the necessary condition is not that easy. Yeah. So you can feel it will demand your G to be finite and of order, finite abelian of order. G should be finite abelian group of odd order. क्योंकि देखो, इसका जो ऑनटूनेस पार्ट है ना, ये इतना इजी नहीं है। ऑनटूनेस का मतलब क्या हो गया कि हर एक एलिमेंट स्क्वायर होना चाहिए, बट इन अ ग्रुप एवरी एलिमेंट इज स्क्वायर। इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, एंड फाइंडिंग स्क्वायर इज नॉट एन इजी टास्क। फाइंडिंग स्क्वायर इज नॉट एन इजी टास्क। So onto part is a difficult part. So if I restrict my G to be a finite abelian group of odd order, then what will happen? You see, the homomorphism part is easy. If you go to f of AB, it will be AB whole square. But group is abelian, so it will be A square, B square. It will be FA, FB. So homomorphism is easy. Now for kernel,
Kernel will be collection of all those x from capital G, which are going to identity under this method fx is x square. This will imply x belongs to G such that order of x is either 1 or 2. तो अगर दो ऑर्डर के एलिमेंट मिले तो ये कभी कर्नल 1 1 नहीं होने देगी इसको. तो दो ऑर्डर का एलिमेंट आपको कब नहीं मिलेगा, जब ग्रुप का ऑर्डर ऑड होगा. सो दिस विल बी आइडेंटिटी इफ ऑर्डर ऑफ जी इज ऑड. और ऑन टू के लिए, फॉर ऑन टू सपोज जी इज फाइनाइट. क्योंकि फाइनाइट से क्या होगा, फाइनाइट से क्या होगा आप देखो, अगर कोई भी एक मैपिंग है जो सेम सेट से सेम सेट पर है, सेम कार्डिनलिटी के सेट से सेम कार्डिनलिटी के सेट पर है, फाइनाइट के केस में अगर ये 1 1 होती है तो अपने आप ऑन टू हो जाती है. अगर 1 1 हो जाती है तो अपने आप ऑन टू हो जाती है. अगर जी फाइनाइट लेंगे तो 1 1 नेस से ऑन टू नेस भी आ जाएगी. सो दिस विल डिमांड योर ग्रुप टू बी फाइनाइट अबेलियन एंड ऑफ ऑर्डर ऑड. एंड ऑफ ऑर्डर ऑड. ओके, मैं यहां पर एक प्रॉब्लम और ऐड कर रहा हूं ना. आई एम एडिंग वन मोर प्रॉब्लम. अंडर दीज कंडीशंस सपोज जी इज फाइनाइट अबेलियन ऑफ ऑर्डर ऑड. ये प्रॉब्लम मैं जैन के एग्जाम से उठा रहा हूं बट मुझे अच्छा लगा था, सो आई हैव पिक्ड अप दिस प्रॉब्लम. तो सपोज जी इज फाइनाइट, और लेट्स सपोज G is abelian and has no element of order 2. Then can you think about it? What will be the quantity product GI where, or product G varies over capital G. G easy है ना. इसके बारे में कुछ कह सकते हो? सॉरी, प्रोडक्ट जी वैरीज ओवर कैपिटल जी. इट इज अ स्मॉल थिंग फॉर यू नाउ. Yes. Yeah, it will be identity. Easy problem for you. बिकॉज ग्रुप अबेलियन है तो आप क्या कर सकते हो, सारे ही जो एक दूसरे के इनवर्स होंगे उनको आसपास ले सकते हो, और दो ऑर्डर का एलिमेंट है नहीं तो आइडेंटिटी बचेगा, बाकी सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे ना. क्योंकि अगर कोई एलिमेंट आएगा तो उसका इनवर्स भी आप ला सकते हो बिकॉज ऑफ अबेलियन एंड फाइनाइटनेस. तो दिस क्वांटिटी विल बी ई ओनली. दिस विल बी ई ओनली. ठीक है, चलो. Now, let me come to some more problems. Let's suppose G be any group. Defined as G of O, collection of all those functions which are bijections from G to G. So clearly, this is a group under composition. जैसे
परम्यूटेशन ग्रुप बनता है इन अ सिमिलर मैनर दिस फॉर्म्स अ ग्रुप. ठीक है. So suppose you are defining a set of all functions which are bijections from G to G, and then you are defining a particular map for each fixed A in G. You are defining F from G to G. जिसने group action पढ़ा हुआ है, this is group acting from the left side. इसको आप group action भी बोल सकते हो. मतलब आप G सेट को भी G मान रहे हो, और जिसने group action नहीं पढ़ा आप जिस simple FA को map मानो. So is it a bijection? Yes. Take 2 minutes to verify is it a bijection or not. Take 2 minutes and verify whether this is a bijection or not. So this is an easy problem ना, क्योंकि अगर आप ax बराबर ay लोगे तो ax बराबर ay होगा. आप ग्रुप के अंदर हो तो आप a का इनवर्स लगा करके x बराबर y बना दोगे. ऑनटूनेस इज ऑल्सो इजी, क्योंकि हर एक एलिमेंट की प्रीइमेज आप निकाल दोगे. x की प्रीइमेज क्या होगी? a इनवर्स ऑफ x. सो फॉर ईच a in G, fa is a bijection. From G to G, G to G. Now collect all these FAs and give it a name, say capital X. Can you feel that this X is actually a subset of SG of O? Can you feel that this X is a subset of SG of O? Now my question is that तो मैं इन सब FA को कलेक्ट कर रहा हूँ, है ना? Then let me collect all the FAs for each A in G. Now let's verify whether this is going to be a subgroup of SG of O or not. So what do you think about it? क्या ये subgroup बनेगा? Will it be a subgroup? अब आंसर करो इसका. Will it be a subgroup? Yes. Is it a subgroup? Okay, so this is, I'm leaving it to you as a small exercise. This is a subgroup. You can verify. Okay, Richa Singh, yes. Anirban, yes. Partha, yes. Okay, cool. So this is a subgroup. Now, you can feel there is a spatial relation between this FA and G. For each A in G, it is a bijection. So you would like to define a group homomorphism. Let's suppose phi is a map from capital G to the set X, which is
all those FAs from where A varies over G. This is the subgroup of SG of O. It is a natural map. You can define, you can send your G to corresponding FG. Verify करो अभी. Take 5 minutes and verify nicely. Take 5 minutes and verify each and every step clearly. Verify now. तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के लिए आपको नीड पड़ेगी इस एक्स में ऑपरेशन किस तरीके से बिहेव कर रहा है. तो वेरीफाई नाउ. Take 5 minutes, verify one by one. बाकी लोग करो. So you two are getting. पार्था आपको मिला, ऋचा सिंह आपको मिला. अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे बता दो, मैं क्लियरली आपको लिख दूंगा, है ना. अगर आप में से कोई भी स्टक कर रहा है, जस्ट लेट मी नो, आई विल हेल्प यू. इफ एनीवन इज स्टकिंग, लेट मी नो. Okay, so this is a ग्रुप होमोमॉर्फिज्म. इसमें आप क्लोजर प्रॉपर्टी बस एक बार देख लो, जैसे इसमें जो होल्ड हो रही है. अगर आप एफ ए, क्योंकि एस जी ओ में कंपोजिशन है, तो एक्स में भी क्या होगी, कंपोजिशन होगी एस एफ ए एफ बी. अगर आप इसको किसी एक्स पे लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, एफ ए एफ बी ऑफ एक्स. इट विल बी एफ ए ऑफ बी एक्स. इट विल बी ए बी एक्स. दिस इज नथिंग बट एफ ए बी एट एक्स. तो यहां से आप बोल सकते हो कि एफ ए कंपोजिट एफ बी इज नथिंग बट एफ ए बी. होमोमॉर्फिज्म में प्रॉब्लम हो रही है ना. ओके, आई विल हेल्प यू. इसीलिए मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी लिखी है. और होमोमॉर्फिज्म में प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि जब आपने इसको एक्स को ग्रुप वेरीफाई करा होगा ना, तो वहां भी प्रॉब्लम हुई होगी डेफिनेटली. चलो देखो, इफ यू डू फाइव G1 G2, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, F G1 G2, but F AB is same as F A composite F B. That means F G1 composite F G2, because the closure property in X is like this.
एफ ए ओ एफ बी एक्स कर रहे हो तो आपके पास आ रहा है एफ ए बी एक्स. दैट मीन दिस फंक्शन एफ ए composite एफ बी इज सेम एज एफ ए बी. So this is nothing but phi g1 composite phi g2. Am I done with the reasoning up सही है? Is it fine now? So this is a group homomorphism because left is by under multiplication and the right side is by composition. ठीक है? So this is a 1-1 onto group homomorphism. So what it is telling you कि ये जो आपका ग्रुप है ना, this group is isomorphic to X and X is a subgroup of the permutation group. So this is Cayley's theorem. This is Cayley's theorem. So this is telling you आप हर किसी ग्रुप के टाइप का एक सब ग्रुप परम्यूटेशन ग्रुप में ढूंढ सकते हो. आप हर किसी ग्रुप को परम्यूटेशन ग्रुप के अंदर ढूंढ सकते हो. तो एवरी ग्रुप इज सिटिंग इनसाइड द परम्यूटेशन ग्रुप. जी फाइनाइट होगा तो हम परम्यूटेशन ग्रुप को फाइनाइट बना देंगे. और किसके अंदर मिलेगा? जैसे जितने एलिमेंट जी में है ना, उसी से लेकर उसी सेट पर जितने बाइजेक्शंस होंगे उसके अंदर ही आप जी को डाल सकते हो. ठीक है, कूल, समझ गए? So this is called Cayley theorem, that every group is isomorphic to some subgroup of Sm. Okay, fine. Let me see some more problems for you. मैंने ना आपको एक पीडीएफ भेजी है ना. आई हैव सेंट यू वन पीडीएफ. उसमें से आपने जनरेटिंग सेट पढ़ना. मैंने आपको पीडीएफ भेजी है जिसमें से आप एसएन के और एचएन के जनरेटिंग सेट पढ़ सको. और जो वो ऑथर है ना, मतलब जो उस पीडीएफ के ऑथर है, अगर आपको कभी भी अलजेब्रा में मतलब कोई ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आ रही है, फॉर एग्जाम्पल कैले थ्योरम हुई या कोई ऐसी टिपिकल चीज है अलजेब्रा में, मतलब अलजेब्रा मतलब पूरा अलजेब्रा, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी, गैल्वा थ्योरी, मॉड्यूल थ्योरी, इवन सम पार्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव अलजेब्रा, कोई भी ऐसा पार्ट हो ना, तो आप गूगल पे उनका नाम डाल के सर्च कर लेना, आपको कोई ना कोई बहुत अच्छा आर्टिकल या पीडीएफ मिल जाएगा. इट इज रिटन बाय कीथ कॉनरेड. इट इज रिटन बाय कीथ कॉनरेड. आपके व्हाट्सएप पे मैंने भेज दिया ग्रुप पे ना, आप चेक कर सकते हो. तो अगर आपको कभी भी कोई थोड़ी अनकंफर्टेबल चीज लगे मॉडर्न अलजेब्रा में, तो आप इनके पीडीएफ में उनको सर्च कर सकते हो. नाउ लेट मी गिव यू सम मोर प्रॉब्लम. सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे ना. Anyone would like to answer this problem? Number of group homomorphisms from this group to this group.
Yes, partner, your answer is correct. एक्चुअली जब भी आप कोई भी होमोमॉर्फिज्म फाइंड करते हो Z से किसी भी ग्रुप पे, तो आपको पता है ये मैप कैसी होती है, f of n बराबर f of n times f of 1 times n. Every group homomorphism is like this. तो जितनी चॉइसेस f of 1 के लिए होंगी ना, उतनी ही डिफरेंट आपके पास होमोमॉर्फिज्म्स होंगी. सो चॉइसेस फॉर f of 1, आप f of 1 को GL and ZT के किसी भी एलिमेंट पे भेज सकते. ठीक है, क्योंकि Z से किसी भी ग्रुप पर जितनी भी होमोमॉर्फिज्म्स होंगी वो सारी इसी फॉर्मेट की होंगी. अगर आपको याद हो तो कल जब मैंने Z से Z पर होमोमॉर्फिज्म फाइंड करी थी तो मैंने कोडोमेन का यूज नहीं करा था होमोमॉर्फिज्म्स के लिए, बस मैंने डोमेन की प्रॉपर्टी को यूज किया था कि 1 उसका जनरेटर है, इसलिए मैंने 1 को टारगेट किया था. ठीक है, सो वी विल हैव दीज मेनी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट. ओके, आज की क्लास मैंने कहा था थोड़ी छोटी रखूंगा. लेट मी गिव यू सम होमवर्क प्रॉब्लम. Problem number 1. Prove that this problem I am taking from TIFR exam. Prove that every finite group can be generated by at most 2 elements. Prove that every finite group can be generated by at most 2 elements. Number 2, if suppose tau is equal to 1, 2, or let's suppose if sigma be any arbitrary member of Sn is the permutation group, sigma 1, 2 sub k, sigma inverse is given by sigma 1, sigma 2, sigma k y. ठीक है, तो अगर आप किसी भी परम्यूटेशन को इस तरीके से ऑपरेट कराओ, सिग्मा कोई भी परम्यूटेशन इनटू सिग्मा इनवर्स, तो ये जो राइट साइड आपको मिलेगी ना, ये मिलेगी सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3. नंबर 3, ये इसी का एक्सरसाइज 2.1 नाम देता हूं. When 2 elements in Sn are conjugate, when 2 elements in Sn are conjugate, so problem number 2 and 2.1 are closely related, because if you understand the first one, then you get the second one, 2.1. Okay, so this is the problem number 2.1. Let me give you some more problems. One easy exercise for you. G mod ZG is cyclic if and only if G is abelian. You need to target this problem as well. ठीक है, एक ये प्रॉब्लम हो गई. Let me give you 1 or 2 more problems. Number 4. Read all Taylor's theorem. And number 4,
Number 5. If G be a group of order n and P divides n, where P is a prime number, and P square is bigger than n, this implies G has a unique subgroup of order P, and hence normal. And the subsequent problem is if H is the unique subgroup of order K in a group G, then H is normal in G. Then H is normal in G. कोई प्रॉब्लम दोबारा दिखाना है तो बता दो मुझे, कोई डाउट है तो पूछ लो. These are the 6 problems for you. इनको आप वर्कआउट करना. Everyone will demand basics. और जब आप एक एक प्रॉब्लम को नाइसली लिखोगे तो ये आपके सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर देगा. ठीक है. सो थिंक अबाउट इट. कुछ प्रॉब्लम्स बेसिक्स है, कुछ एडवांस है, और जो एडवांस है उसकी रेसिपी मैंने आपको ग्रुप पे भेज दी है. उसको एक बार पढ़ोगे तो यू विल बी एबल टू वर्कआउट. Okay, any other doubt, or should I leave the class? So we will meet in the next class. We will focus on these problems if you are not able to cover up, and I will bring you some more new problems, or maybe after one class, I will shift the topic. I will come to rings and fields. I will come to rings and fields. सर लीनियर अलजेब्रा आप ही पढ़ाए. नहीं, लीनियर अलजेब्रा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तुषार सर पढ़ाएंगे. एक्चुअली आई एम नॉट हैविंग इनफ टाइम. बुक शेयर कर दूं? रुको, मैं आपको एक बहुत अच्छी किताब शेयर कर रहा हूँ. अगर आप उस किताब के एक्सरसाइज कर लो जो आपको लगे लेवल के हैं, सो मोस्ट ऑफ द वर्क विल बी डन. I have shared one book. ये problem book है ना, it will help you a lot. No, after model algebra, I will be teaching ODE, PDE. Actually, I'm looking for photocopy of myself. If you get somewhere, you can let me know. How I also prepare for NET और GATE. इसका आंसर मैं आपको नहीं दे सकता इस क्लास में, क्योंकि आप लोग वो लोग हो जो मतलब ऑलरेडी आपके पास एग्जाम क्वालिफाई है और आप प्रिपरेशन कर रहे हो इंटरव्यूज के ना. बट स्टिल इफ यू आर फीलिंग कि आप इनको करना चाहते हो तो आप एक काम करो कि आप उसके जो PYQ है ना, मतलब वो जेन्युइनली लगाओ. मतलब एक सब्जेक्ट के PYQ को पूरा खत्म कर दो, उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाओ. और PYQ जब करोगे तो कॉन्सेप्ट की नीड तो पड़ेगी ही पड़ेगी. जब भी आप जिस टॉपिक पे जा रहे हो ना, उससे पहले उसके एक बार शॉर्ट नोट्स या थ्योरी एक बार कवर कर लो. और अगर आप नेट को टारगेट करो तो आई विल से कि लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस डिटेल में होना चाहिए आपके पास. मतलब डिटेल से मेरा मतलब है
जैसे ग्रुप थ्योरी में आप जवाब दे पा रहे हो, आई कैन सी कि यू आर कैपेबल, आई नो दैट योर कॉन्सेप्ट्स आर फाइन. सो रिंग लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस दोनों ऐसे ही करके जाना. बाकी टॉपिक जो है उनको शॉर्ट थ्योरी पढ़ के या सिर्फ डेफिनेशंस और फॉर्मूला लिख करके जाना. और गेट के लिए तो आप सारे टॉपिक ही आपको पढ़ने पड़ेंगे, उसके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है, उसमें मैं बहुत ज्यादा आपको नहीं बता सकता. ठीक है, चलो ओके देन, इस क्लास को खत्म करते हैं यहाँ पे. विल मीट ऑन सैटरडे. मे बी मैं कल आपकी क्लास लूँ क्योंकि एक क्लास मिस हो चुकी है, और सैटरडे को ना हम लोग इंटरव्यू प्लान करेंगे. सो इंटरव्यू से पहले आई विल आस्क कि आप में से कौन कौन देगा, बिकॉज आई डोंट वांट एनी टाइप ऑफ डिसरप्शन. मतलब मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग इंटरव्यू का आपका स्केड्यूल और आप लोग नहीं आओ, क्योंकि अगर आप लोग सीरियस नहीं होगे तो आई विल डेफिनेटली पोस्टपोन और आई विल कैंसिल द इंटरव्यूज. ठीक है, तो आप लोग से मैं पूछ लूंगा पहले ही, कोई आप में से ऐसा हो जो नहीं आएगा तो हमें पहले ही आइडेंटिफाई नोटिफाई कर देना, सो दैट वी कैन कीप द टाइट शेड्यूल. Okay then. Let's finish the class. Thank you so much everyone for joining this session. Good night, goodbye, and best wishes for the future. Goodbye.